मैदा हो गया, ये रही दही, चिल्ड वाटर, सॉल्ट. जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, भूख लग रही है. I do this in the kitchen when I have to get all the ingredients out and organize everything. Sometimes you forget one or two of the ingredients if you don't check. Kind of like recording and forgetting to turn on the mic when you record. I've done this before. It's not fun. आप अगर ये सोच रहे हैं कि रणवीर क्या बना रहा है, रणवीर वही बना रहा है जो आपके घर में 30 मिनट में पहुंच जाती है. आप उसको ऑर्डर कर देते हैं, 30 मिनट में पहुंच जाती है. गैस कर लिया होगा ना. या फिर वो हमेशा आप बहाना मारते हैं ना, अरे नहीं हम तो नहीं बनाते, हमारे घर में तो अवन नहीं है. पिज्जा बगैर अवन के पिज्जा बनाते हैं जी. ठीक है ना. Okay, so today this is for people that do not have an oven at home or don't want to use one to make a pizza. When I used to live in Barceloneta, I didn't have an oven in my little apartment. I only had a little cooktop. अब जो मॉडर्न पिज्जा है, आज का पिज्जा जिसे हम पिज्जा के तौर पे जानते हैं, उसकी इजाद कहते हैं 1889 में हुई. एक शेफ थे राफेल एस्पोसितो, और उन्होंने ऑब्वियसली नेपल्स के थे, वो साउथ ऑफ इटली के थे, और उन्होंने रानी को खुश करने के लिए इटली के 3 रंग का पिज़्ज़ा बनाया. लाल होता है, सफ़ेद होता है, हरा होता है. और लाल सफ़ेद हरा उन्होंने जो पिज़्ज़ा बनाया, वो पिज़्ज़ा मार्गरीटा, क्योंकि क्वीन मार्गरीटा थी उनके नाम से फेमस हो गया. तो आज भी मार्गरीटा पिज़्ज़ा इज़ still considered the oldest pizza or the first pizza to be ever invented. This is a story that I have heard many times, and there are some other stories that I have also heard as well. But the pizzeria that Raffaele was working at was the Pizzeria Brandi, which is still in Napoli. They actually have a plaque on the outside saying that they first invented la margherita. So there were other types of pizzas, or at least say flatbreads before this, but this is the one that got famous. तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमको चाहिए मैदा और सब्जियां. ये मैदा है जिसमें 30% मैंने आटा मिलाया हुआ है. इसके अंदर थोड़ा नमक डाला हुआ है. So this is going to be a mixed recipe with a little bit of wheat added to some all-purpose flour. Okay. और साथ में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है. अगर आपके पास समय है तो रात में ईस्ट डाल के खमीर लगा के छोड़ दें. लेकिन अगर मेरी तरह तुरंत आपको आइडिया आते हैं लास्ट मिनट कि चलो पिज़्ज़ा खाएं, तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आपके पास होना चाहिए. ठीक है. And he's going to be saving a little time by not adding yeast. It is true you do have to allow the yeast to eat, allow it to multiply, and then it will start rising. एक सुंदर सी कटोरी में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, तेल डाल के मिक्स करना है. ये गया दही. ठीक है जी. अभी ये गया पानी, और ये गया हमारा घोल बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का. He's not really measuring how much he's adding. He's just doing it by eye. And in the savory kitchen, we do that a lot. We cook a lot by eye, by feel, by taste. Now in baking or with pastry, you need to be more exact. और ये थोड़ा पानी और डाल के एक पतला सा डो बनाना है. ये देखिए बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं ना आप. डो जो है वो रनी होना चाहिए. अगर रनी नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा. अब ये जो रनी डो है ना, जो बहता हुआ डो है, इसको हल्का सा रेस्ट करेंगे. और जब तक ये रेस्ट हो रहा है, अपने पिज़्ज़ा की सब्जी काट लें. Again, if there are any Italians watching, just keep in mind that this is not going to be a traditional recipe. That this video is not meant for Italians or Europeans, but specifically Italians to watch. Not until today. अभी एक पैन में ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल, बटर नहीं डालना यहाँ पे जी. बहुत कम बोलता है रणवीर ब्रार के बटर मत डालना, इसलिए प्लीज़ बटर मत डालना. This I agree with him. If you're at home and you don't have any oil, then yeah, you can use butter to saute the vegetables, but olive oil is better. लाइटली सौते करना है, सब्जी को पूरा नहीं पकाना. लेकिन क्योंकि ये अवन में नहीं पैन में पक रही है, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे पकाना ज़रूरी. If you're going to be making a lot of vegetables, you want to saute the vegetables as he's saying. If you're going to be adding, say, mushrooms, and mushrooms contain a lot of water, but if you're going to be adding a lot, they're going to release that water and you can start boiling the vegetables, and you don't want that. So if you're going to be making a lot, I suggest sauteing this in batches, unless you have a
big saute pan. तो ये सब्जियों को हल्का सा कुक किया. बेसिकली हमने क्या किया ना, हमने प्रोसेस ऑफ कुकिंग शुरू कर दिया और सब्जी के अंदर इसके बाद डाला चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो. सब्जियों को निकालते हैं. ऑरिगेनो, चिली फ्लेक, अनियन, that whole Mediterranean feel that's coming through. कोई अभी तक हमने हिंदुस्तानियत नहीं करी है इसके साथ, करेंगे भी नहीं. सिंपल फ्लेवर है, सिंपल रखते हैं. इसको कलर खराब ना हो इसके लिए फ्रिज में डाल. Now, it is true that the closer to the Mediterranean you get, the more olive oil we use. The Mediterranean, if you are not familiar with it, is not just one type of cuisine. There are many different types of cuisines, there are many different cultures, there are many different countries, and a lot of different, well, histories and everything else that go with those countries. If you are to compare Morocco to Spain, the cuisine is different. And if you are to compare, say, France to Italy, or at least southern France to Italy, there may be some crossover and some similarities. If any of you guys have never ever visited the Med, I would highly suggest that one day when you do, that you go to a couple different countries to see the differences, not just in the food, to see the differences in the history and the cultures. तो बेस का डो रेस्ट कर रहा है, टॉपिंग रेडी हो गई. बचा क्या? पिज्ज़ा सॉस. पिज्ज़ा सॉस के लिए क्विक पिज्ज़ा सॉस के लिए finely chopped बारीक कटे हुए onion. He's emphasizing quick pizza sauce. This is important. Now, when making a pizza at home, if you do want to make a quick pizza, you don't have to make the pizza sauce if you don't want to. You can just use, I would say, a good quality type of plum or canned tomatoes to use for the pizza sauce, again, depending on what type. Or if you are going to make some, say, basil tomato sauce or Napolitan sauce, that you make it in batches and you make a lot of it and you can freeze the rest, and that way you have some that you can use whenever you want. गार्लिक. अभी बनाना है सॉस, तो गया थोड़ा ऑयल. ऑयल में गार्लिक, अनियन, हल्का सा स्वेट करना है बस. उसके बाद फ्रेश टोमेटो प्यूरे. अब मैंने टोमेटोज को ब्लांच नहीं किया, छीला नहीं, सीड नहीं निकाले, कुछ नहीं किया. पूरे टोमेटोज लिए, उनका पूरा टेस्ट दिया. मतलब अननेसेसरीली टमाटर से टमाटर का हिस्सा निकालने में मेहनत क्यों की जाए, है ना. अगर आप थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं फिर भी फ्रेश टोमेटो को प्यूरे कर लीजिए, उसके बाद छान लीजिए उसको. Yes, I agree with him. There is no need to make more work for yourself when you don't have to. थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा केचप ही बनाने के लिए, हमें केचप ही अच्छा लगता है ना. थोड़ा सा सिरका, salt. This is true. You don't want to turn this into ketchup. Then again, who knows? Some people may like to put ketchup on their pizza. If you do have like acid reflux, or when you eat tomato sauce, if you are a little sensitive, you can add more sugar to it to help reduce the acidity. This will help. बिल्कुल थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और ये सॉस का पानी अच्छे से सुखाना है, नहीं तो फिर डो को गीला करेगा ना, मज़ा नहीं आएगा. इसको यहाँ कर देता हूँ. अभी भी देखिए रनी है, भाग रहा है. ये कुछ इस तरह का होना चाहिए. देखिए, Again, keep in mind, this is not traditional or anything, and this is not specifically supposed to be a New York pizza, Napolitan, or whatever. But if we are to compare this to Adam's consistency for his very first dough recipe, this has a better consistency. It's more workable. डो को थोड़ी देर और रख देते हैं ढलने के लिए. ठीक है ना. टोमेटो सॉस को ना इतना थिकन करना है. It's called a tomato concasse in Italian. Concasse is specifically to score the tomatoes. You blanch them, peel the skin, you cut them. Well, you cut them so you can de-seed them. You take the seeds out. I'll cut them up very small. अब कायदे से जो पिज्ज़ा बेस है ना, वो कभी बिलता नहीं. कोई भी पिज्ज़ा कभी भी बिलता नहीं. उसका जो डो है वो इतना पतला होता है कि वो बस ऐसे उंगलियों से ही फैला दिया जाता है. This is true. You don't want to take a rolling pin and necessarily roll the dough out. Depending on your skill level in the kitchen, it's not ideal if you want to make a good pizza dough. But again, if you're at home making it, nobody's going to be filming you. You're not going to be posting it on social media.
It doesn't really matter at home. So that's why I said runny dough बोल रहा था ना, मैं इसीलिए बोल रहा था कि अगर डो रनी नहीं होगा तो पिज्ज़ा ऐसे फैलेगा नहीं. फोक से ऐसे कर लेते हैं prick. And if anybody is wondering why he's using the fork to make little holes in the pizza dough, this is to help release the gases so you don't have like a bubble or any bubbles that appear on it, so it helps remain flat. If you look at a lot of recipes for making quiches or pies or anything like this, a lot of those recipes will have the instructions to make little holes with a fork in the dough and to also put, say, beans or something else on top while you pre-bake them so they will not start to balloon up. अब इस डो को बिल्कुल धीमी आंच पे दोनों तरफ से सेकूंगा. एक तरफ से अच्छा बराबर सेक लूंगा और दूसरी तरफ से बिल्कुल नाम भर का सेकूंगा. जिस तरफ से बराबर सेक लूंगा उस तरफ जाएगी टॉपिंग और सब्जियां और चीज़. This is going to be a little pizza. If you are making this at home, you may want to make a couple little pizzas because this is quite small. Or if you have a bigger pan, make it a little bigger. As you can see ना, there's a rise. जैसे पिज्ज़ा बेस उठता है वैसे ही उठ रहा है. धीमी आंच पे पकाना है बस. That's the trick. ये देखिए जैसे पिज्ज़ा बेस का कलर होता है वैसे कलर आ गया ना इसमें. अभी नीचे की साइड को आराम से पकने देंगे और जो साइड हमने पका ली है ऊपर की उसके ऊपर डालेंगे टोमेटो कॉर्न कैसे. भाई आमतौर पे हम सब जानते हैं कि पिज़्ज़ा जो है वो इटली का है, लेकिन पिज़्ज़ा जो वर्ड है वो एक्चुअली आता है पेक्टोस से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, क्योंकि सबसे पहले ये माना जाता है कि जो फ्लैट ब्रेड्स हैं उनको ग्रीक में ऐसे दबा दबा के और उसके ऊपर ऑयल डाल के, शक्कर डाल के, मेथी डाल के और पकाया जाता था, और वो जो गांठें बन जाती थी ना तो क्लॉट्स बन जाते थे, इसलिए उसको क्लॉटेड कहा जाता था. True, flatbreads have been around for eons before pizza was made, and I'm sure somebody at one point in time decided to put, well, not before the tomatoes were introduced to Europe, but other ingredients on top. In France, there's a little town called Pérouge. This is a little town that's just outside of Lyon. I've been there a few times. It's a little medieval town. And there is a little thing that's actually quite popular from Pérouge. It's called the galette de Pérouge. And this galette looks like a pizza. It's a flatbread. And what they do is they put sugar on top, they bake it, and that's pretty much it. It's a sugary galette. It's nothing complicated, it's simple, but this is quite popular from that town. तो पेक्टोस मतलब क्लॉटेड ब्रेड. तो पेक्टोस मतलब क्लॉटेड ब्रेड या वो गांठों वाली ब्रेड, और वहाँ से फिर पिज़्ज़ा जो है वो इटली आया एज अ कॉन्सेप्ट. और इटली में खासतौर, साउथ इटली में खासतौर नेपल्स में टमाटर जो है वो गरीबों का खाना था. टमाटर बहुत होते थे, तो द पुअर मैन जो गरीब थे वो अपनी रोटी के ऊपर ऐसे हल्के से टमाटर तोड़ तोड़ के डाल के और उसको बेक कर लेते थे, और पिज़्ज़ा की शुरुआत वहाँ से हुई. I love how he emphasizes that it's not just Italy, it's southern Italy, it's Napoli. One interesting thing, if any of you are into history, is that Napoli, not only is it the birthplace of pizza, Napoli was also a Greek colony. So you do have to go on the tours, and you may have to have the things pointed out to you because they're not quite self-evident unless you know what you're looking at. And of course, the food in Napoli is one of the most important things. They take it very seriously. Not just the pizza, you have a lot of other types of food in Napoli, which is delicious, and if you do go, you definitely need to try it. आज की डेट में नेपोली जो है वहाँ के सॉसेस, टोमेटो सॉसेस आज भी बहुत फेमस है. और जो ये कौन कैसे कह रहे हैं, तो दैट सॉस इज एक्चुअली नेपोलितान सॉस. नेपोली से आया हुआ नेपोलितान सॉस. और नेपोली में एक टमाटर होता है सैन मार्जानो टोमेटोज, जो ऐसे लंबे होते हैं और बहुत ही टेस्टी और जूसी होते हैं. और ये कहा जाता है कि टमाटरों के बादशाह होते हैं सैन मार्जानो टोमेटोज. उन टोमेटोज से बनने वाला पिज़्ज़ा सॉस कायदे से नेपोलितान सॉस होना चाहिए, लेकिन लगभग हर पिज़्ज़ा सॉस को आप नेपोलितान सॉस कह सकते हैं, या फिर वो जैसे वो कह रहे हैं कौन कैसे. The more that you get into food, the more you can see a lot of crossovers, especially here in Europe, with a lot of the dishes or ingredients, and especially here in Spain. The most popular tapa is la croqueta. Now, croquettes are actually French, and you have other things such as French fries. We call them French fries, but technically they're Belgium
fries. And in Belgium, they're actually quite popular to go with mussels. Crema catalana is popular here in Catalonia, creme brulee in France. That's a discussion that I don't want to get into because I live here, so I'm not going to. थोड़ा सा चीज़ और just to hold the vegetables together. अभी मेन चीज़ क्या है ना, हम लोग गलती क्या करते हैं कि सब्जियां नीचे डालते हैं, फिर उसके ऊपर चीज़ डाल देते हैं, बाद में सब्जियां दिखती नहीं है। पिज़्ज़ा जो है वो इतना सुंदर होता है, सारा बाद में चीज़ से वो ढक जाता है। आपको वो नहीं करना, आपको जो है वो रंग निखारने, इसके लिए पहले चीज़ फिर सब्जियां, वरना आप बनाने जाएंगे वेजिटेबल पिज़्ज़ा, दिखेगा चीज़ पिज़्ज़ा, लोगों को मज़ा नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने अपनी ज़िंदगी में 4 साल सिर्फ पिज़्ज़ा ही बनाया सुबह से शाम, इसलिए रणवीर ने बताया है आपको। Something tells me that he has done this a few times and it has turned out to be a cheese pizza. Guys, let me know down below what your favorite, not just your favorite style of pizza is, but what your favorite type of pizza is. Is it a cheese pizza? Do you like, well, in America, pepperoni is quite popular. Do you like vegetables? Do you like a margarita? Or do you like pineapple in your pizza? And I'm not going to judge you. Let me know in the comments. It's nice and juicy, हाँ, मतलब सब्जी बराबर पक गई है, चीज़ बराबर मेल्ट हो गया है, अंदर से एकदम पक चुका है। This is true. If you are going to be making a pizza like this, you need to cook the vegetables prior to putting them on the pizza. Because in a normal pizza oven in the pizzeria, you have temperatures of up to 450, 500 or more centigrade. And everything cooks in a very short amount of time. In the normal ovens at home, it takes a little longer to cook, or most ovens don't get up to even 300 centigrade. एकदम क्रिस्पी। जैसे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, नाइसली डन। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करेंगे। ब्यूटीफुल। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेक्स्ट टाइम जब आपको लग रहा हो कि भाई 30 मिनट में पिज़्ज़ा घर में आ जाएगा, तो 200-250 रुपये वेस्ट मत करिए, मुझे दे दीजिएगा। कोई नई रेसिपी सीख लेंगे हम लोग। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। खाना जब एक बार हाथ से बनाना शुरू करो, अपने हाथ से बनाए हुए खाने की जब आदत पड़ जाए ना, तो आदमी बाहर से खाना मंगवाना बंद कर देता है। Do try the pizza. This, I fully agree with him. There's no reason to not make something yourself at home, unless, of course, you don't have the time. This is understandable. We haven't reviewed that many pizzas, but I have eaten a lot of pizzas in my life. I've had a lot of pizzas. I've had a lot of bad pizzas, and I have seen a lot of pizzas. Now, this pizza, for not being a traditional pizza, for being something that you make on the stovetop, for maybe something for a college kid or to make, or, you know, if you don't have an oven in your house, this could be a good option. Now, as far as the dough, it's not going to be the same as actually making a good dough, because this is supposed to be just something quick and easy. Let me know down in the comments, guys, what you think of Chef Ranveer making this little pizza. But keep in mind, for all the Italians or pizza connoisseurs out there, this was meant for an audience that, you know, people don't know really how to make it, and this is another idea on what limited resources they have. And if you haven't subscribed to my channel yet, then by all means, look at some of my other videos, check out my channel a little more if you're not sure yet, but please be sure to subscribe if you do enjoy my content, as it helps my channel out greatly to grow, and I do appreciate it. Be sure to check out this video here before you go, and I will see you guys again very soon. Until next time, take care.